The Indian Parliament has now passed a bill that makes any insult to the national song Vande Mataram to be a punishable offence. The Lok Sabha passed this legislation amidst din following a pretty brief debate. The move has come a day after Rajya Sabha passed the bill with its passage in the lower house. This proposed amendment now moves closer to becoming a law. The legislation seeks to amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971 to include the national song Vande Mataram under its ambit. At present, the law provides penal provisions for disrespecting national symbols such as the Constitution, the national flag and also the national anthem with punishment of up to 3 years imprisonment. And once this comes into force, insulting, obstructing or also causing disturbances during the singing of Vande Mataram will now attract the same punishment of up to 3 years in prison, a fine or even both punishments meted out together. नारेबाजी क्यों हो रही है? इतना बड़ा विधेयक है, 185वीं वर्षगांठ के अंत में इतना बड़ा विधेयक आ रहा है जिसमें हमारे वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जैसा सम्मान मिले। जो एक वंदे मातरम का था सुजलाम सुफलाम, उसकी भावना हम सब में जागृत हो, तो इसके लिए क्यों आपत्ति कर रहे हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? अगर नारेबाजी नहीं होती तो हम लोग उस पे विधेयक पर चर्चा करते, लेकिन बार बार स्थगित करके उसके बाद अंत में हम लोगों ने चर्चा भी थोड़ी करवाई, 2-3 विपक्ष के लोगों ने बोला भी, उसके बाद हम लोगों को पास करवाना पड़ा। Now, in the Lok Sabha, the bill was passed through a voice vote despite protests from the opposition members. The opposition has been calling for a discussion on police excesses against the students who, remember, were protesting against the NEET paper examination leak. The commotion persisted even as the House continued with its legislative business and the bill was passed. The members of Parliament from both the Treasury and the opposition traded attacks outside of the Parliament as the debate inside remained stalled. बिना चर्चा के और एक राजनीतिक गलत नियत से इस तरह के हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के यादगारों का प्रयोग करा जाना, उन लोगों द्वारा जो राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में उस समय जिन्होंने दूरी बनाना किन कारणों से ठीक उचित समझा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि देश के लोगों को हजम नहीं हो रही बात। For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.